Good morning, students. Myself Rohit Agarwal. Today we are going to start macroeconomics. Today we are going to discuss macroeconomics. It's a class 12th part of economics. Now, students, we are starting with chapter number 3, that's a national income and its related aggregates. It's one of an important and interesting chapter. So we are starting with chapter number 3. Somehow, as per the weightage, it is one of an important aspect. So now, first and foremost, before starting the chapter, I just want ki the name of the chapter is National Income and Related Aggregate. What does the term National Income and Related Aggregate means? मतलब national income and उसके साथ में कुछ उसके related terms that we are going to discuss in this chapter. Okay, so there are few terms. I hope board is visible to all of you students. The term is here domestic income and on the opposite side a national income, right? First and foremost, before proceeding with the national income, we'll get or interpret the meaning of domestic income. And before this, I just want a one line about the macroeconomics, student. What does the term macroeconomic means? Macro is a Greek term. We can say in a Greek, it's a macros, M-A-K-R-O-S. It means large. There are two terms, micro and other one is macro. When we are talking about the micro, it means we are talking about the small, it means we are talking about the individual. If I am talking about myself, it means I am talking about the micro. While if I am talking about the economy as a whole, it means I am talking about the macro. So now we are going to start a chapter. Domestic income, here the terms domestic income. What does the term domestic income means? It refers to a sum total of factor income. Hope definition is visible to all of you. And I have underlined some important terms. So please concentrate on that particular terms. Sum total of factor income generated within domestic territory. वो जो definition अपने आप में बहुत broad है. Sum total मतलब sum up. When we aggregate all the numbers, that's a sum up. Factor income. What does the term factor income means? Students, here the four terms are here. If you are able to see these terms, if it is visible, that well good. Compensation, rent, interest, and profit. So when we compile these four terms, we'll get the factor incomes. What does these terms means? Compensation means compensation of employees. When we are doing a job in any of the organization, so we'll receive a salary, remuneration, wages. So that amount is known as a compensation that the company is paying to their employees. We can say salary and wages. Okay, might be in any kind also. Thereafter, three more terms. We'll just make one mnemonics or a small trick to memorize that term. RIP. RIP. Rent, interest and profit. बच्चों. Rent, the income which is generated from land. Suppose for example, if we have one land with us and we have let out that land to any of the person, so we'll generate one rent income. Okay, so this is also a factor income. Thereafter, one term is interest. I hope you know the term interest. When we deposit our money in a bank, so alternatively bank will pay some amount, additional amount on that is known as a interest. In a similar manner, if we introduce a fund in our business, as a capital investment, as a capital, so on that particular capital we earn interest, or we'll just take it out some part as an interest on that particular capital. So we have done with the compensation, we have done with the rent, we have done with the interest. Now one more term is the profit. When we are doing any business activity, so in that particular business, why we are doing a business? Simple motive bacho, students, that's a profit. So these are the four terms: compensation, RIP, rent, interest and profit. When we compile all the four incomes, it's a compensation of, it's a factor income. So sum total of factor income generated within domestic territory. Students, now this is an important term. What does the term domestic territory? Domestic territory means, आपको एक छोटा सा बच्चों सर्कल दिख रहा होगा. This circle represent or belongs to our India. हम बोल रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, the person who are residing in India, whether they are normal resident, मतलब they are holding a citizenship of India, or they are non-resident, the total income earned by them is considered as a part of a domestic income. Domestic territory means a geographical boundary line of our country that the government has decided कि okay, ये हमारी country की boundary lines हैं. Within this particular boundary lines, जो भी person reside करेगा वो Indian कहलाएगा. Okay, so whosoever have earning any amount in our domestic territory, that particular amount is considered as a part of domestic income.
होप टर्म क्लियर हुआ होगा बच्चों. नाउ when we are talking about the national income, again some sort of a similar definition, some total of factor income earned by normal resident of a country. बच्चों एक छोटा सा टर्म का डिफरेंस है यहाँ पे, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी, sorry, of a country. We have already done with the discussion of factor income. Now what does the term normal resident? Normal resident means an ordinary resident who are residing in a country. First and foremost, an ordinary resident who are residing in a country for a period more than 1 year. कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर रह रहा है और उसको रहते रहते 1 साल से ज्यादा हो गया है, he will be considered as an ordinary resident. Plus a person who have an economic interest means who are performing any sort of a economic activity in our country, और जो साथ में कोई ना कोई economic activity भी perform कर रहा हो. Just have a look here. Here the two terms are here, OR plus EI, ordinary resident plus economic interest. So कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहा है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल कंसीडर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. नाउ कैन वी से नॉर्मल रेसिडेंट मींस द पर्सन हु आर ओनली रिसाइडिंग इन इंडिया? नो. अगर जस्ट हैव अ लुक स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट अस ब्लैंक सर्किल, this is what India, and this is one more circle, and this particular circle comprised of different countries, America, USA, China, and few many more countries are there. अब ये जो different countries के अंदर क्या हमारा कोई पर्सन, इंडिया का कोई पर्सन जाके नहीं रह सकता? आंसर इज यस, दे माइट बी. हो सकता है बहुत सारे इंडियंस हमारे, हो सकता नहीं, होता ही है स्टूडेंट्स. बहुत सारे इंडियंस कहीं हमारे ब्रदर्स, सिस्टर्स, रिलेटिव्स एंड मैनी मोर, वो लोग सब बाहर जॉब करने जाते हैं. तो अब भाई वो जो पर्सन वहां जॉब कर रहे हैं, क्या वो इंडिया का पार्ट नहीं है? नो, दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया. जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारी इंडिया है, ये जो हमारा इंडिया का सर्किल है, इसके अंदर हम केवल अपने रेसिडेंट, जो पर्सन इंडिया में रह रहा है, जो रह रहा है, दैट्स अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब जिसको इंडिया में रहते रहते 1 साल से ज्यादा हो गया है, अलॉन्ग विद दैट हु हैव अ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसको कंसीडर करेंगे. एज वेल एज जो हमारे इंडियंस बाहर वर्क कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, वो भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर किया जाएगा. जबकि डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते टाइम एज सच कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता. इसके अंदर हम केवल बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन ऑफ द कंट्री. केवल जो हमारी कंट्री के अंदर है हम उनको ही कंसीडर करते हैं. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, देयर आर सम एक्सेप्शंस. डोमेस्टिक टेरिटरी में जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो देयर आर सम एक्सेप्शंस. वन इज एम्बेसी, consulates and military establishment. बच्चों आई होप यू आर क्वाइट अवेयर अबाउट द टर्म एम्बेसीज. जो भी हमारे राजदूत ऐसा अपन करके बोलते हैं, एम्बेसडर्स जो होते हैं, जो एक कंट्री के दूसरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक इंडिया के अंदर कोई फॉरेन कंट्री का एम्बेसी है, ठीक है, और वो मोर देन 1 ईयर यहाँ पे हो चुका है. कैन वी कंसीडर हिम एज अ पार्ट ऑफ अ डोमेस्टिक टेरिटरी? कैन वी कंसीडर हिम in that particular income of that person in domestic income? Answer is no, because they cover under the exception. ECM, embassy, consulates and military establishment. हमारी कंट्री की मिलिट्री अगर बाउंड्री या बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री की बॉर्डर में चली जाती है, तो क्या उनकी इनकम हम डोमेस्टिक इनकम में कंसीडर नहीं करेंगे? आंसर इज यस, वी विल कंसीडर दैट इनकम. इट डजंट मीन्स, हमने क्या बोला, देयर आर सम एक्सेप्शंस. ECM, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट. इसका मतलब अगर ये 3 चीजें, ये 3 अगर किसी दूसरी कंट्री के हमारे यहाँ हैं, हम उनको अपना पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे. और यही 3 अगर हमारी कंट्री के किसी दूसरी कंट्री में, देन ओनली वी विल कंसीडर दैम. ओके, होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा. नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट पार्ट बच्चों, देयर आर वन फ्यू मोर टर्म्स बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेशनल इनकम and its related aggregates. So what does the term related aggregates means? Here the term is gross investment and one more term, that is the net investment students. So gross investment and net investment होता क्या है बच्चों? एक बहुत सिंपल टर्म से हम डेफिनेशन लिखी है. एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड ऑन इन्वेंट्री. हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर बहुत सारी मशीनरीज, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, बिल्डिंग, ये सब हमें रिक्वायर्ड होती है टू रन अ बिजनेस. तो हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो फिक्स्ड नेचर का इन्वेस्टमेंट होता है, दैट विल कंसीडर एज अ फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. वाइल जो भी बिजनेस के अंदर हमें स्टॉक रिक्वायर्ड होता है, सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल दैट वी कीप एज अ स्टॉक,
as a inventory, that also a part of a gross investment. So in total expenditure on purchase of fixed asset and on inventory, इसका sum up करके जो भी amount आता है that is what a gross investment. And on the other side there is one more term बच्चों, net investment. I hope board is visible to all of you. Net investment means increase in, parallelly I am also reading, so please be focused. Increase in stock of capital. Increase in stock of capital means बच्चों that is हमारे पास जो भी स्टॉक है दैट इज व्हाट एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग. ड्यूरिंग द ईयर हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट एड ऑन किया है दैट विल बी कंसिडर एज अ नेट इन्वेस्टमेंट. देयर इज अ वन सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज व्हाट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा समझते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट 10,000 रुपीज. हमने एक मशीन खरीदी, एक प्लांट फर्नीचर कुछ भी एक एसेट खरीदी 10,000 की, ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर हम उसको यूज करते हैं. जब हमने वो एसेट में इन्वेस्टमेंट किया 10,000, दैट इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. वाइल एट द एंड ऑफ द ईयर उस मशीन की वैल्यू रह गई 9,000 रुपीज. सो सर 1,000 कहाँ गई? देयर इज अ वन टर्म डेप्रिसिएशन, जिसको हम अदर टर्म्स में अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं, वी कैन से अल्टरनेटिव नेम बोल सकते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. सो अगर हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर उसको सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है स्टूडेंट्स, और जो डिक्रीज होती है दैट इज ड्यू टू डेप्रिसिएशन. ओके, सो जो डेप्रिसिएशन डिडक्ट होने के बाद एट द एंड उसकी वैल्यू बचती है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट. होप ये टर्म्स भी आपको समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स. नाउ वन मोर टर्म, दैट्स इट. thereafter we can get, there's a some concept of minor conversion, so we'll interpret that minor conversion also. That is one of an